हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड एंजॉइंग लाइफ एंड स्माइलिंग। तो आज मैं हूँ होटल लीला पैलेस बैंगलोर में स्टेकेशन के लिए। So I'm here for 2-3 days and I'm going to actually enjoy this hotel and show you around. So this hotel is one of the best 5-star hotels of Bangalore और बहुत ही सुंदर पैलेस स्टाइल का होटल है। इट इज़ लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द सिटी और जब आप अंदर घुसेंगे तो आपको लगेगा किसी पैलेस में आ गए। एंड ये जो बना भी है वो विजयनगर एम्पायर के पैलेसेस से इंस्पायर होके बना है विद ऑल द मॉडर्न एमिनिटीज़। सो चलिए एक साथ एक्सप्लोर करते हैं इस होटल को। और यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स है विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्विजीन्स, देन स्पाज है और फिर साथ ही साथ स्विमिंग पूल है। तो देखते हैं कितना कुछ हम एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो अगर आप बैंगलोर में रहते हैं तो even if you don't want to come and stay here, you can just try out their restaurant. So they have 3 restaurants: Zen, Cyprus, Jamawar, and also a library bar. So this is the first time I'll be exploring this hotel and the restaurants. So जब आप एक जगह पे रहते हैं ना तो आप उसके होटल्स वगैरह ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते हैं। आप बाहर जाके डिफरेंट प्लेसेस के होटल्स एक्सप्लोर करते हैं। बट दिस वाज अ गुड आइडिया ऑफ अ स्टेकेशन हियर। सो आई थॉट चलो एक स्टेकेशन भी हो जाएगा, सम चेंज, एंड लेट मी शो यू हाउ होटल लीला पैलेस लुक्स लाइक। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको रूम टूर दे देती हूँ। बहुत ही सुंदर रूम है एंड मोस्ट ऑफ द रूम्स आर ऑलमोस्ट लाइक दिस, मे बी अ लिटिल बेटर ऑल्सो, एंड इससे कुछ छोटे रूम्स भी हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ होटल लीला पैलेस का मेरा रूम। सो दिस इज़ द रूम। आप जैसे एंटर करते हो यहाँ पे एक क्लोजेट है। I think you can hang your clothes here, keep your luggage here. So and you can iron your clothes also. Now on your left you have the washroom. And this is the washroom, guys. Then again on my right there is another. So this is a work desk. You can sit and do your work here.
Then I think here you have a balcony. आपको सुबह दिखाऊंगी. And a cozy sitting area. Best part is this bed. Here they have a mini fridge, some snacks, and different types of tea. So friends, बाकी का रूम टूर मैं देती हूँ early in the morning. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बालकनी से. तो ये देखिए छोटी सी बालकनी है इसमें. दिस इज द व्यू आई. So they have given a nice place to sit and work. यहाँ पे बैठ के मैं अपने वीडियोस एडिट कर सकती हूँ. And they also have a TV. चलिए अब बाहर जाके एक्सप्लोर करते हैं. So this is a nicely done up area outside my room. तो अब हम जा रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए. बुफे ब्रेकफास्ट विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री विद द रूम. We've come for the buffet breakfast and let me show you. बहुत वैरायटी है यहाँ पे. We have some dosas, masala dosa and plain dosa, and paratha, सेविया उपमा, वड़ा, some sausages, उपमा and sambar. तो लेट मी स्टार्ट विद द ब्रेकफास्ट. और सबसे पहले मैं स्टार्ट करी हूँ इंडियन से. एंड बैंगलोर आए और यमी डोसा नहीं खाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है. तो चलिए खाते हैं, ट्राई करते हैं यहाँ की डेलिकेसी. द पनीर पराठा इज़ एक्चुअली यम. Food is quite good here. और ये जो सेवियाँ उपमा है ये भी बहुत टेस्टी है. टिपिकल साउथ इंडियन डिशेस. या द पनीर पराठा वाज वेरी गुड. टाइम है ये डोसा, क्रिस्पी डोसा ट्राई करने का. और इस डोसे के साथ ना इन्होंने 3 चटनी दी है. एक ग्रीन, एक रेड और एक ऑरेंज. ट्राई करके देखते हैं. वैसे तो very nice, crispy. So we have some hash browns, some chocolate muffins, croissant. Then we have a Danish fruit pastry, walnut cake, and also some pudding. So I'm going to enjoy it. So these croissants are very fresh. Buttery and very nice. And
Food is really good. So friends, I'm done and it was a very delicious breakfast. And I must tell you that you must try all the baked products here, and they're really very good. Then I'm in the private dining area, or it's a little less crowded here. You can have your own space and sit here and enjoy your breakfast, lunch, dinner. They also have an open area where I was sitting and having my breakfast, and the breakfast was delicious. You must try the buffet breakfast. And let's explore a little more. Let me show you what all is there. It's a beautiful place, and you can't imagine this place in the middle of of the city. इतना lush green and it's actually very good. तो आपको मैं दिखाती हूँ the private dining area. Then I'll take you to the open breakfast area, and also let's try exploring the swimming pool area. तो चलिए मेरे साथ and let's explore Leela Palace. So this is the live counter. तो चलिए चलते हैं स्विमिंग पूल एरिया एक्सप्लोर करते हैं. तो चलिए आपको स्विमिंग पूल एरिया दिखाती हूँ. एंड यहाँ पे आज एक वेडिंग हो रही है, तो चलिए देखते कैसा लग रहा है वेन्यू. So behind me is the swimming pool area, and आज यहाँ पे कोई इवेंट है, इसके लिए डेकोरेशन वगैरह हो रहा है, नहीं तो स्विमिंग पूल आज एंजॉय कर पाते. एंड दिस इज द बेबी पूल एरिया और द किड्स पूल. Lush green here. तो शाम को ये जगह बहुत सुंदर लगने वाली है. They are all doing up this place for a wedding reception, and the lighting, the flower decoration. मुझे तो लग रहा है बहुत ही सुंदर वेन्यू है for all the parties and some wedding functions. तो चलिए आपको पूरा पूल घूम के दिखाती हूँ. And that's the hotel at the back. पूल के बैकग्राउंड में आप होटल देख सकते हैं. द बैक साइड ऑफ द होटल. सो ब्यूटीफुल. So friends, let's end this vlog here. In my next episode, I will show you the beautiful garden
of Leela Palace, the different restaurants, and also the shopping arcade. Stay connected and do not forget to subscribe, like, and share. So I hope you enjoyed this vlog. Till we meet again with another vlog, keep smiling, keep shining, and keep enjoying life.